चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। Whatever may happen, I will not live here. Whatever may happen, I will not live here. चाहे जो हो जाए, वह तुमसे इस बारे में बात नहीं करेगा। Whatever may happen, he will not talk to you. Whatever may happen, he will not talk to you. कुछ भी हो, पापा मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। Whatever may happen, father will not let me go with you. Whatever may happen, father will not let me go with you. कुछ भी हो जाए, वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेगा। Whatever may happen, he will start his own business. Whatever may happen, he will start his own business. चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उसके साथ विवाह नहीं करोगे। Whatever may happen, you will not marry with her. Whatever may happen, you will not marry with her. चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। Whatever may happen, he will not appear in this examination. Whatever may happen, he will not appear in this examination. कुछ भी हो जाए, मैं इस टीम में नहीं खेलूंगा। Whatever may happen, I will not play in this team. Whatever may happen, I will not play in this team. वह मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं। He would like to talk to me into English. He would like to talk to me into English. वह अपनी खुद की कार खरीदना चाहेंगे। He would like to buy his own car. He would like to buy his own car. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। Whatever may happen, I will not live here. Whatever may happen, I will not live here. मैं यहाँ कभी नहीं आना चाहूँगा। I would never like to come here. I would never like to come here. इतनी छोटी उम्र में at such a tender age, भगवान न करे, God forbid, मन की शांति मिलना, get peace of mind, किसी को बहुत दुख पहुंचाना, cut somebody to the quick, किसी की योजना विफल करना, fail somebody's plan, रोटी सेकना, bake the chapatis, तमाशा खड़ा करना, create a scene, अपने आप को किसी की जगह रखना, put oneself in somebody's shoes, मैं यह बात हजम नहीं कर पा रहा हूँ, I am not able to come to terms with this thing, अंत में, eventually in the end, किसी को चोरी करते पाना, find somebody stealing, किसी पर तरस खाना, take pity on somebody, जीवन में कुछ स्पेशल करना, do something outstanding in life,